My dear students, myself Dr. Rajesh Kumar Sahu, teaching you chemistry. The things is that we have in the last class we have discussed about alkaloids and terpenes, and also we have discussed what is terpenes, what is the isoprene rule, and its physical properties like this. Today we will start 2 or 3 important terpenes. One is called citral, CITRAL. So पिलामाने आज आमे 2 or 3 important terpenoids विषय बा terpenes रे structure elucidation एवं तार synthesis पढ़िबा सेइटु होची प्रथम कथा हला हमरो citral terpenes TERPENES citral CITRALs आगे जानिया पिलामाने citral कोन. This is your citral. This is the structural formula of citral. This is the structural form of citral. Eta hochi pile important. This is the structural form of citral. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So molecular formula equal to C10. Then H is, you have 3 hydrogens here, it is CS3. 3 hydrogens here, there are 2 hydrogens, again 2 hydrogens, is a methyl, you have 1 hydrogen here and again 1 hydrogen here, like this. So you have in total 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this is 6. So 9, 6, 15 and 1 is 16. So H 16O. This is the molecular formula of citral C10 H16O. So you can see the structure, but how can we elucidate or how can we determine this structure? माने ए structure को हमें केमिति जानिबा बा identify करिबा जे एटा ही होची citral. So remember here you have seen the open chain. What you can say the aldehyde compound open chain pura khola achi, cyclic nuho. There are 2 double bonds, means it contain unsaturation, along with you have a aldehyde group, along with you have a aldehyde group. So now you see this thing that in this case, so first of all remember this, that in this compound, so we have to know the presence of the aldehyde groups. In this way, you the presence of aldehyde groups. So how can you know the aldehyde groups? First of all, to know these things, you have to know that functional group determination. Functional group determination. So to determine the functional group, here you have aldehyde. How to know it contains aldehyde? It reacts with hydroxylamine NH2OH to give you oxime. So if citral or the organic compound reacts with NH2OH and gives you oxime, means it contains CHO group, as you know from the functionality of the aldehydes. So if a compound contains aldehydic functional group, it will react with hydroxylamine to give you oxime. One more also, it reacts with sodium bisulfite NaHSO3, sodium bisulfite to give you bisulfite product, to give you bisulfite product. So preparation of these 2 compounds indicates that it contains an aldehydic group, that is what the CHO. Second one is that if you oxidize with silver oxide, moist silver oxide, if you oxidize with silver oxide, then it gives you xeranic acid. What is this one? You see, this is your C10
H16O undergo oxidation, C10 H16O2. This one is your xeranic acid. This one is your xeranic acid, indicating that the oxidation does not undergo any cleavage of the carbon-carbon bond or any other thing. It simply added one more oxygen. Means this one becomes your OOH, COOH. This is your xeranic acid, GERANIC. So these three reaction indicates that it contains a functional group that is CHO. तो या भितर CHO अच्छी जहाँ पाई ए रिएक्शन सब होची. तो ये है आमर फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन केते गुड़िए केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस. नेक्स्ट वन इज कार्बन स्केलेटन. सो ये ए रे गला, बी को जीवा कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटन तार कार्बन स्केलेटन यार केमितिका माने यार जो आम कहूँ ना ये जो कंपाउंड देखुच देख ए कंपाउंड लुकिंग लाइक दिस ये भाया अच्छी. यू कैन सी द कार्बन्स. ये हूँ कार्बन रो स्केलेटन. यू कैन लुक दिस स्ट्रक्चर. ओके आई कैन नॉट राइट डबल बॉन्ड ऑल्सो. सिंपली यू हैव ए skeletal structure. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the skeletal structure of carbon in case of citral. Then how can you prove these things? Very simple thing. When citral, for example, this is my citral, it undergoes oxidation in presence of potassium hydrogen sulfate. जदि मु citral को नहीं potassium hydrogen sulfate रे heat करी, it undergo oxidation, then it gives you paracymene. It gives you paracymene. This is the structure of paracymene. Look at this structure. This is paracymene. Means this is paracymene, or you can say chymine or chymine like this. Paracymene or parakymine. CYMENE. So parakymine indicates that simply this bonds comes here, means एटा ए भलिया अच्छी ए बॉन्ड टा मध्ये ए भलिया लिखि दबा तो या भितर बॉन्ड तयारी होची, या भितर बॉन्ड तयारी होची एवं एटा रिंग कंपाउंड हे जाउची ड्यू टू ऑक्सीडेशन. तो ए parakymine structure contains a isopropyl group and a methyl group. You can see here this is a isopropyl type of group, this is a methyl group. So this structure रो confirmation हमको जनाउछि जे it may have this type of skeletal structure. So skeletal structure रो प्रमाण है पाउछु by oxidizing with KHSO4. Next one is presence of double bond. See re, presence of double bond. Presence of double bond. You can see here there are two double bonds are there. So how can you know the presence of double bonds? Very interesting thing is that presence of double bond. So presence of double bond, how can you know this one? By the process called as ozonolysis. Ozonolysis. This one will give you by you can presence of double bond you can know from ozonolysis. You know from your earlier classes or in plus 2 or plus 3 faster classes. So when you break this double bond by ozonolysis, as you know it requires ozone and then you have a zinc and water. This is the reagent used for ozonolysis. So when you this compound undergo ozonolysis, 8 break karibo or 8 break karibo because it has double bond in two positions and you get the compound. One is acetone, CH3CO CH3 मिलिबो आउ तापरे ए compound मिलिबो. This compound is CHO. You can have glyoxal, sometimes called as glyoxal also, and this one is CH3CO. So you can have a CH3CO CH3. So you can get acetone. Then next one is your glyoxal. एक पार्ट हबो glyoxal, CHO single bond CHO. आउ ए जो पार्ट हबो से होची CH3, then CO, CH3CO, then CH2, CH2 and then again CHO. So you get three compounds. One is acetone, one is this is your acetone. You get
This is your glyoxal. Glyoxal, you get this one. And the next one is lauvaldehyde. Lauvaldehyde. This is lauvaldehyde. CH3CO, a ketone, a acetone, like a ketonic group, or you can say the acetyl group. Then CH3, CH2, CHO called lauval, LAEVULDEHYDE. So lauvaldehyde, glyoxal and acetone, these three are the byproducts obtained or the products obtained by ozonolysis of this what? This citral. So ozonolysis of citral gives you three products indicating that there are presence of two double bonds. And if you join this position, so how can you know the position? So we can say position of double bond. Position of double bond. Double bond को जगह रे अछंती. देखो मु तो केमी join करूची. If you join these three compound, this is more acetone. देखो पिला टिके भला हबे. ये होची मोर acetone. This is CH3CO, CH3 acetone. ताकू लागुची हमरो CHO, CHO. तो मु ताकू बाबा एटा को लगबे. ए जो एटा this is called lauvaldehyde. तो ये हला CHO. ताको देखो मु उल्टे के लिखुची CH2, CH2 तापरे CO तापरे CH3 एवं ओटे काम करबा ए CH3 को हम टिके तळकु लिखि दबा हमको बुझिया पाए कि बा ऊपर को ताको लिखि दियो CH3 देन डबल बॉन्ड O ताकू तापर लिखो ताकू CHO आउ CHO. लुक एट दिस देखो तुम कौन कली तो यही जो ओजोनोलिसिस जगू तीनोटी प्रोडक्ट मिलथिला सेला एसीटोन मिलथिला कारण CH3CO CH3 एमती भांगी जीवो एटी हबो O एटी हबो O एटी हबो O एटी हबो O. तो ये ला CHO सिंगल बॉन्ड CHO ये ला CH3CO तापर CH2 तापर ये CHO ये ला CH3CO देखो एक्जेक्टली से आसीची ये मोर एसीटोन ये मोर ग्लायोक्साल ये लाउवाल्डिहाइड. बर्तमान मुझे तीनटा को अरेंज कली देखो मु केमजा करछि डबल बॉन्ड O आउ जो CH डबल बॉन्ड O ताके पाखापाखि लिखिछि तापर डबल बॉन्ड O एवं CHO पाखापाखि लिखिछि. या माने हला एते बेले ओजोनोलिसिस हुए आम जानिछे डबल बॉन्ड ब्रेक करिवो एपटे हबो O एपटे हबो O ता माने हला जे डबल बॉन्ड ता भांगी जीवो दीटा O लागिवो आ दीटा O बाहरी गले डबल बॉन्ड हे जीवो. तार मु कहबी या जे एई ओ बाहरी गले एई कार्बन डबल बॉन्ड हे जीवो. तो यू कैन सी नाउ व्हेन आई जॉइन दिस थ्री यू बैक नाउ गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये आसी गला एबे CH नाउ योर CH तापरे CH2 तापरे CH2 तापरे C ये आसी गला CH3 एवं ये आसला डबल बॉन्ड दीटा O उठी जीवो डबल बॉन्ड हे जीवो डबल बॉन्ड देन अगेन CH आउ तापरे हे जीवो CHO. This is the way you can see that how I position these three molecules to have a real structure of citral. This is nothing but your citral. Why? You see it one double bond, second double bond and you have a CHO group. So these three compounds can be joined or the position of double bond can be ascertained by simply what? The ozonolysis of the compound and by just joining these three fragments to make the structure of citral. So this is the structure elucidation of citral and this structure is nothing but here this one. If you draw in the form of carbon-carbon bond structure, this is nothing but same as this one, this citral. This is your citral. So in this way we are elucidating the structure of citral. First of all, molecular formula C10H16O, then the functionality is here CHO and double bond. Double bond is the main functional group you can identify by reacting with the hydroxylamine. It forms oxime, sodium bisulfide, it forms bisulfide adduct and with oxidation you get the xeranic acid. So this indicating the presence of CHO. Then the structure. The structure, how it contains how many carbon? It contains 10 carbon. How can you confirm it? By simply putting it with oxidation. Potassium, hydrogen, sulfate. So when you this compound undergo oxidation, it gives you parakymine or paracymine. Parakymine indicating that this is this type of structure. It contains isopropyl group and a methyl group.
and when it undergoes ozonolysis, it's simply indicating that the position of double bonds, and when these three fragments are joined at a particular position, you are getting the citral. This is where you can elucidate the structure of citral. Now आमे जीवा वर्तमान आमे citral को केमिति तैयारी करिबा ताको आमे कहउछु synthesis. Synthesis आमे तने citral लो कोन पढिया पिले आमे synthesis पढिया माने how can you prepare synthesis. Synthesis is from 1,3 dibromo 3 methyl butane. 1,3 dibromo 3 methyl ब्यूटेन रु आमे तैयारी करिबा साइट्राल. एटा हमर स्टार्टिंग मटेरियल किसे ना 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन से के देखे दे पिला माने ये हेले CH2Br 1,3 कहछि 1 2 3 1,3 एठी ब्रोमीन लागितिबो तो 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल तो 3 कोड मिथाइल लागितिबो ब्यूटेन 1 2 3 4. This is the structure of 1,3 dibromo 3 methyl butane. खाली वैलेंसी पके दबा ये हिजबो CH2 हेला देखो बिले 1 2 3 तो 1 आउ 3 डाइब्रोमो तापरे 3 रे मिथाइल तापरे 1 2 3 4 मेन चेन कार्बन मेन चेन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन hence the compound is called 1,3 dibromo 3 methyl butane. तो यही कंपाउंड को नहीं आम यही कंपाउंड रु यही कंपाउंड तैयारी करिबा साइट्राल आम तैयारी करिबा केमिति करिबा प्रथम कथा हला इतरा यूज करो दिस इज you know the compound this is very sodium acetyl acetone. Sodium acetyl acetone देखि दियो ए कार्बनटा एटा H बाहर जाइछि तो एटा CH माइनस हो जाइछि. सो व्हेन दिस वन आमे नबा सोडियम एसिटाइल एसीटोन कंपाउंड रो ना एक्चुअली एटा CH2COCH3 थिला विथड्रॉइंग ग्रुप तो ए कार्बन एसिडिक थिला बेस पकैली NaOH माइनस टी यार H को नहीं गला एवं गोटे कार्बानियन आयन तैयारी कला ये हला कार्बानियन तो बतानी ये अटैक करिवो एठी की आ याको बाहर कर दो याको बाहर कर देले कोन हबो त हबो हमर एटा आई जीवो CH2 ये गला CH ताकू लागी गला COCH3 ताकू लागी गला COCH3 तापर होइला डी CH2 तापरे C एटी ब्रोमीन मिथाइल वेरी सिंपल थिंग किछि बुझिबार असुविधा नाही. दुटा ब्रोमीन थिला है ये टर्शियरी ब्रोमीन ये प्राइमरी ब्रोमीन CH माइनस अटैक कला गोटे बड़ लिविंग ग्रुपटे अच्छी तो लेस हिंडर साइट अटैक करुच्ची एवं ब्रोमीन बाहरी गला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सो ब्रोमीन गला आउ CH COCH3 लगी बर्तमान आम ये कंपाउंड कौन करवा ना करदे हाइड्रोलिसिस. इफ यू डू हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड बा आमे कहूँ जे अल्काली देले यही कंपाउंड ब्रेक कर जीवो COCH3 अच्छी तो ये अलगा है कि बाहर जीवो तो आम एटा ब्रेक कर दबा H आउ OH. So now the compounds becomes CH2 हो गला तो now तो लिखिबा CH2 ये निजे हो गला ताकू लागी CO ताकू लागी CH3 तापरे पुनी ये CH2 एटा गला CH2 गला तापरे पुनी आउडे CH2 अच्छी ताकू लागी C ताकू लागिला CH3 ताकू लागिला CH3 आउ एठी लागी हमर ब्रोमीन. ठीक है पहले भल के आखि पकाउथबो कारण एटा CH3CO तापरे CH2 तीनटा अछि 1 2 3 तापरे C मिथाइल आउ के पिला हमर रहिला ब्रोमीन. तो यही कंपाउंड हमर तैयारी हला. एबे हमें एठी जहा करिबा ता ना हला रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन तो पढ़ीच हेतरा यूज हुए जिंक आउट यूज हुए कौन पे कौन यूज हुए कहल एटा ICH2COOC2H5 ICH2COOC2H5 आउ जिंक है
दिस इज योर इथाइल एसीटेट तो आयोडो सब्स्टिट्यूट इथाइल एसीटेट आउ जिंक आमे यूज करबा तेले पहिले कोन हबो ना जान सब एटा दिस इज बिकॉज जेडएनआई हे जिवो तो ये दुहे मिसले कोन होंती ना ये दुहे मिसले आगे तैयारी हुए एटा कोन तैयारी हुए ना आई मुटिके ए पटा को एबे लिखौ छी एटा किछि काम नाही आउ ए पार्ट टिके खाली लिखे देबा हमें बस ओके सो ना ए पार्ट हमर हे जिवो जेडएन CH2 जेडएनआई CH2 COO C2H5 माने ए पटा भांगी जीवो ये माइनस आउ ये प्लस जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो से प्लस हे जीवो आउ ये हे जीवो हमर कोन हे जीवो माइनस तो वर्तमान ए जोटा अछि ये बर्तन अटैक करिवो एही कार्बन को आउ ये एआडे जीवो दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मेट्सकी रिएक्शन तले पले कोन हबो ना CH3 C एटा हे जीवो O ZNI काना ZNI प्लस एटा हबो O माइनस ताकू लागिला के ए पार्ट देखम त के लगुछ ताकू लागिला CH2 COO C2H5 लागिला एवं तापर बाकी जहाँ थिला CH2 मु आउ CH2 ड्र न करी पूरा ए भलिया ड्र कर देली तापर C तापर CH3 एवं एठी लागि छी हमरो Br ये होची हमरो कंपाउंड ये लागि छी हमरो Br बर्तन हम यदि हिट कर दबा फॉर एग्जांपल और जाक मु डिहाइड्रेशन कर दबा बा हाइड्रोलिसिस कर दबा हाइड्रोलिसिस कर दियो हाइड्रोलिसिस कर देले ये भांगी जीवो ये हे जीवो OH आउ H ये मध्ये भांगी जीवो H आउ OH तो एक बर्तन एक कंपाउंड आसी होला CH3 सिंगल बॉन्ड C एठी हे गला OH एठी हे गला CH2 COOH बाकी जहाँ थिला से आ रहिला आ एठी अछि ब्रोमीन याको हमें डिहाइड्रेशन कर दे परिबा हमरो डिहाइड्रेशन कले एठु सब कंपाउंड पय जिवो तो हमें यदि याको पुनी डिहाइड्रेशन भी करबा आ डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन भी कर देबा तबे A2H आ A2 ब्रोमीन मिसी ये HBr बाहरिबो A2H आ A2OH मिसी ये H2 टू थिंग्स एठी हबो डिहाइड्रेशन आ डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन HBr बाहरिबो तबे कोन पिले हबो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर पाखा पाखी आम आसी पहुँची गलुनी तो आम एटा को डिहाइड्रेशन भी करिपरिबा आउ करबा डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन तो टू थिंग्स यू कैन पुट हियर तो ये जो कंपाउंड आसिला से कंपाउंड को वर्तमान आम H2O H प्लस दे डिहाइड्रेशन करबा एक नंबर रे दुई नंबर NaOH बा KOH अल्कोहलिक NaOH बा KOH दे डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन करदबा तेले पिला कोन हबो CH3 रहिला C ये तो H2 बाहरी गला तो ये हो गला C डबल बॉन्ड CH हो गला ये आसी गला हमरो COOH ये आसी गला COOH बाकी ये जातला से रहिला डबल बॉन्ड एठी हो गला ये आ ये हो गला CH3C देखो हम कंपाउंड प्राय तो तैयार हो गलानी यारी ना होची जिरानिक एसिड या ना होची पहिले हमरो जिरानिक एसिड तो आम कौन देखले पहले एठी ना डिहाइड्रेशन डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन मीन्स डिहाइड्रो HBr बाहरला परे कंपाउंड रो शेप आसी गला आ ये तो ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस है कि COH हो जाइथिला ए कंपाउंड हैला हमरो जिरानिक एसिड वर्तमान जो जिरानिक एसिड हम पाइले ए जिरानिक एसिड को आम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड पके दबा तो ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ जिरानिक एसिड हो जिवो ता संगे आम COOH OOC CA HOOC सोडियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड कौन पकेबा पिला में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एटा पढ़िथिबो ड्राई डिस्टिलेशन तक हमें कहू ड्राई डिस्टिलेशन पढ़ाई प्रिपेरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड केमिति ना कैल्शियम या देखो ये एक नंबर रिएजेंट आगे ये पकेब देन दुई नंबर एक पकेब कौन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देले कौन हम ना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब पकेल जिरानिक एसिड ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ जिरानिक एसिड हो से कैल्शियम सॉल्ट ऑफ जिरानिक एसिड सहित एतले सोडियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन हम सेतबेले एई ग्रुपटा हो CHO तो यहाँ पढ़ा ऑलरेडी हो तो मुझे अधिकता को न लेखिक इट इज ए कॉमन रिएक्शन
यदि पे बुझू ना तो मुझे तुमको तले तले लिखि दूसरी कारण तुम कौन बुझे जानी बोली कह पुणी आउ थे तेरे मुझे आउ थे टिके यहाँ लिभे ये मुझे आड कर दिस इज द रिएक्शन आर सी ओ ओ पुणी आर सी ओ ओ सी ए ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एथिटे आरटा एच नुह प्लस एच सी ओ सी ए ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड क्लियर नाउ तो यदि आम हिट करवा तो ये कौन हुए ना हिट कले कौन हुए ना CaCO3 बाहर एमती बाहर जाए CO3 CaCO3 देखो CaCOO आउ O तो रहा किए खाली रहा CHO रहा ये CaCOO आउ O रहा कि आउ रहा CHO रहा तो मैंने पाइला मेरे कौन 2RCHO प्लस 2CaCO3 तो हमको एल्डिहाइड ही मिलूँ दिस इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट सेम थिंग कली तो यही कंपाउंडा हूँ मोर ये जो आर आर लगे पिले मैंने यही कंपाउंडा हूँ मोर जिरानिक एसिड कंपाउंड जहाँ कि मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्स पकई कैल्शियम सॉल्ट ऑफ जिरानिक एसिड कर सारी तापर मुझे मिसाऊँ कौन ना कैल्शियम फॉर्मेट तेल कौन हम ना आर पार्ट रिमेन्स आर को लगे CHO ताने यहाँ हूँ आर यही पार्टा आर ताकू लगे CHO मीन COOH बिकम्स CHO सो जिरानिक एसिड गिव्स यू citral this is nothing but your citral so in this way citral is synthesized so पिला मैंने कौन पढ़ले कह दियो आमे citral रो स्ट्रक्चर केमती जानिबा फंक्शनल ग्रुप कार्बन स्केलेटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड पोजीशन एवं ताको जोड़ी करी आमे citral तैयारी कलु स्ट्रक्चर को इलुसिडेट कलु एवं तापर ताको आमे सिंथेसिस कलु कोथिरु ना 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन रु आमे ताको एही प्रोसेस रे ताको आमे सिंथेसिस कलु पिला मन रख जो आमे जो citral कहूचे एक्चुअली ये दुटा आइसोमेरिक फॉर्म रे एग्जिस्ट करे वन इज कॉल्ड जिरानियल आउट है नियरल तो दिसटा माने यही स्ट्रक्चरटा दुटा फॉर्म रे अछि कौन कौन देख प्लेट यदि मुझे एच लिखिदेवी ठीक है आइडिया कर ये है मिथाइल ये सी देखो तो ये आउ ये अच्छा सेम साइड रे मीन्स डबल बॉन्ड इज देयर इट इज आइसोमेरिक फॉर्म कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस आउ ट्रांस आइसोमर है तो सीस आउ ट्रांस आइसोमर रे व्हेन मिथाइल आउ CHO दुए हेले बिगर प्रायोरिटी ग्रुप्स they are on the what they are on the same side it is called ziranial जो थ्रू कि जिरानिक एसिड आछि तो इट इज कॉल्ड जिरानियल सो इन जिरानियल मिथाइल ग्रुप and CHO group are on the same side. This is the isomeric form of citral. Citral exists in two isomeric form. One is this geraniol and the second one is this one. The second one is, this is geraniol. The second one is, if you write this one, second one is this one. Again similar structure. The difference is here only. You have a CHO group here. Here is H, here is methyl. You see this methyl and CHO are oppositely placed. They are oppositely placed. So when methyl and CHO are oppositely placed, this compound is called neral. Neral. Otherwise, both are same. So neral is nothing but the isomeric form of geraniol, and geraniol and neral are both are isomers of citral. तो पिला नाम कौन पढ़ले आमे पढ़ले साइट्राल रो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कले स्ट्रक्चर को बाहर कले बाय डिफरेंट मेकानिजम्स से आमे फंक्शनल ग्रुप बाहर कले डबल बॉन्ड को जानिले एवं तार कार्बन स्केलेटन को जानिले ताको मिसई करी आमे स्ट्रक्चर तैयारी कले तापर आमे सिंथेसिस कले जे एरा को केमति पाइबा माने ऑर्गेनिक सिंथेसिस हैला 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन रु आमे केमितिका आसिकी साइट्राल पाखे पहुंचले तापर जे साइट्राल रे टू थिंग्स अछि two isomers अच्छी geraniol methyl and CHO on the same side, methyl and CHO on the opposite side of carbon carbon double bond ताको हमें कहले neral. Neral और geraniol ये दुए परफ्यूम्स माने कौन सेंट बा अत्तर मान करे यूज हुए
एवं आमर विभिन्न प्रकार जो कौचे आम जोटा कि मैंने बहुत भल बास्ना आसुव सब्सटेंस से यही मानकर प्रेजेन्स आम देखा पाई था। ओके पिला तो निराल साइट्राल्स पढ़ाईगला आउ नेक्स्ट क्लास रे आम आउ गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा तार टर्पिनियल देले आमर ये जो अल्कालॉइड्स टर्पिन सर ओके पिला बर्तमान एतिकी धन्यवाद।